Hello student, welcome again in ISTPS online classes. Today we discuss journal entries for banking transaction. In this series, first of all, we discuss transaction first, cash deposited into bank or open bank account by depositing cash. We open bank account by depositing cash, and when we cash deposited into bank, both are same activity. In both activity we deposited cash into bank. So there is effect on two account, first bank account and second cash account. In this transaction, bank account related to personal account and cash account related to real account. So the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. In this case, when we deposited cash into bank, bank is receiver, so we debited bank account, and cash account is real account, and according to rule of real account, what comes in debit, what goes out credit, and cash goes out from business. When we deposited cash into bank, cash goes out from business, so we created cash account. So for this transaction we pass journal entry bank account debit to cash account. Next, second transaction, in this transaction cash withdrawn from bank for personal use. There is personal use, and when we uh, use personally some money from our business, it is called drawing. When proprietor withdraw for personal use, it is called drawing. So there is impact on drawing account and bank account. Drawing account related to owner personal account, and bank account is also personal account. In this case, bank is giver, so bank account credited, and owner is receiver, so drawing account is debited. So we pass journal entry for this transaction, drawing account debit to bank account. Now we discuss next transaction, transaction third, cash withdrawn from bank for office use. It is just opposite of depositing cash. When we cash withdraw from bank, bank become giver and cash comes into business. So according to rule of real account, cash account is debited because cash comes into business, what comes in debit, and bank personal account and bank account is giver, so here bank account is credited. So we pass journal entry cash account debit to bank account for this transaction. Next, payment of expenses by check. When we pay some expenses through check, on that time bank become giver, bank is personal account, and according to rule of personal account, bank credited, and expenses is nominal account, so all expenses debited according to rule of nominal account. So we pass journal entry expenses account debit to bank account. Now payment by check to a creditor. Here we take a name Ram. Creditor may be whatever name we denote here. In this case, we assume that our creditor name is Ram. Payment by check. So creditor is personal account or Ram is personal account, and Ram becomes receiver in this transaction. So we debited Ram according to rule of personal account. And bank is also personal account, and here bank is giver, so bank account credited. So transaction, in this transaction the entry become Ram account debit to bank account. Now we discuss next transaction, payment by draft to a creditor. Here we take some amount rupees 1000, and bank charges is also assumed that 20. So for this transaction bank charge particular charges for preparing draft. So bank charges are expenses for us, and Ram is personal account and bank is giver. So in this case there is two entry, but we
passed combinedly because in both entry bank is created. First entry become RAM receiver, so RAM account debit, because RAM is personal account, RAM become receiver, so RAM is debited, and bank is giver, so bank account is created. The first entry for this transaction is RAM account debit to bank account, and second for bank charges, and bank charges are expenses, and according to rule of nominal account all expenses are debited, and bank is giver. Bank is giver means our bank account is giver, from our bank account these charges are charged. So here entry bank charges account debit to bank because payment made by bank. So combinedly we pass general entry RAM account debit, bank charges debit to bank. Bank is similarly created between both transactions, so we debited one time according to combined entry, and combined entry already discussed in previous videos. Now seventh, bank charges charged by bank. Bank charges same like previous transaction 6 when we charges draft charges, when we entered bank charges account debit to bank. Same, there is effect on two account, first bank charges account and second bank account. So bank charges debited according to rule of nominal account, bank charges are nominal, and according to rule of nominal account all expenses are debited. Bank charges are expenses for us and bank is giver, so bank is created. So these transaction we discuss. Now we discuss some other banking transaction. Transaction at check or draft received from a customer and deposited into bank same day. When we receive check or draft from a particular customer, here we denoted customer as a X. In this uh, transaction, there are impact on two account. First customer means X and second bank account. Both are personal account and bank is receiver because we deposited check same day into bank, so bank become receiver, and X is giver, so X account is created, so entry become bank account debit to X account. Now we discuss next transaction, check or draft received from customer and now not deposited same day. When we deposited same day, bank become receiver, but when we not deposited same day, on that time we have to understand entry that check is not deposited into bank means till check in our hand, so we create a new account, check in hand. Check in hand account, and second in this transaction we take customer as a RAM, so second impact on RAM account. In this transaction RAM account is personal account and RAM is giver, so RAM created and check in hand debited. Check in hand treated similar as a cash because cash is treated as real account, so it is also treated as real, and here we not deposited into bank till we considered this account as a check in hand account. So in this transaction check in hand account debited and RAM account credit. Next transaction, when this check means above check which we discussed in transaction number 9, this check deposited into bank, on that time bank become receiver, so their impact on bank account and check in hand account. So bank account debited and check goes out, so check in hand account created. Next transaction, check deposited into bank is dishonored. Dishonored means when a particular customer give check to us and if there is not sufficient amount in his or her account,
then check is not clear and amount is not deposited by our bank into our bank account. In this situation, check called dishonored check. यहाँ पे अगले के अकाउंट में पैसा नहीं है, उसने अपने को चेक दे दिया है, और वो चेक जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करता क्योंकि अगले के अकाउंट में पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, चेक आपको रिपोर्ट करेगा कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया और चेक रिटर्न हो जाएगा। तो बैंक वापस चेक आपको रिटर्न कर रहा है और वो चेक आप रिटर्न करोगे जिससे आपने लिया है। यहाँ पे अपना कस्टमर था राम, तो राम को हम वापस वो चेक रिटर्न करेंगे। तो इस सिचुएशन में दो अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, एक तो कस्टमर जो कि राम है और दूसरा बैंक अकाउंट। तो राम बिकम रिसीवर, जो चेक था वो हम राम को रिटर्न करेंगे, तो राम रिसीवर हो गया इसलिए राम अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक गिवर है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये जस्ट अपोजिट एंट्री है। आप देखें जब चेक मिला था, जैसे एक्स पर्सन से चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, अब ये चेक डिसऑनर होगा तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो ये चेक डिसऑनर की एंट्री हुई। अब हम आगे समझते हैं, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक बाय कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिया है हमने वाई। डायरेक्टली अगर कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है तो उसकी हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट रिसीवर हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कस्टमर है वो गिवर है इसलिए कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर है वाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। नाउ वी डिस्कस check received from a customer and discount allowed is deposited by bank same day। पर्टिकुलर कोई कस्टमर चेक दे रहा है और साथ में हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अपने लिए एक्सपेंसेस है तो उसको भी हम इस एंट्री में डेबिट करेंगे। यहाँ पे इफेक्ट तीन अकाउंट पे है, फर्स्ट बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड एक्स अकाउंट। एक्स इज कस्टमर एंड इज गिवर, सो एक्स अकाउंट क्रेडिटेड, discount allowed debited, and bank is also debited. Bank account debit, discount allowed debit to X. And when check received is dishonored and discount allowed is also disallowed, on that time we pass the reverse entry of the same about transaction। ये जो ट्रांजेक्शन किया उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो X डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये समझा हमने कुछ ट्रांजैक्शन और उससे रिलेटेड एंट्रीज। इसी सीरीज में हम और आगे समझते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ अदर। तो सबसे इसमें अगला है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक देन this interest allowed is become income for us and it is nominal account, so there is impact on two account, bank account and interest account. Our bank account is receiver because interest is directly deposited in our bank account by bank, so bank account debited because bank is receiver and interest is income, so interest account is credited. So receiving interest or allowed interest by bank is treated as a income for us, so interest is credited according to rule of nominal account, all income are credited. So we pass journal entry bank account debit to interest account. Next, interest charged by bank. Interest charged by when we take overdraft, or overdraft means when we excess withdraw from our deposited amount, जितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है उससे एक्सेस अगर हमने विड्रॉ कर लिया है तो ये हमारे लिए क्या है कि आपके लिए ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, और बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस बन जाता है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। और ये इंटरेस्ट जो है हमारा अकाउंट से कट होगा और अकाउंट जो बैंक अकाउंट है अपना वो गिवर हो जाएगा, ये इंटरेस्ट बैंक अकाउंट पे करेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी इसके लिए। फिर उसके बाद है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड क्या होता है, पर्टिकुलर किसी कंपनी हम शेयर खरीदते हैं
तो उस पर हमको डिविडेंड मिलता है जो अपना शेयर होता है प्रॉफिट में। तो ये डिविडेंड इनकम होता है। तो इनकम क्रेडिट होती है, वो हमने पहले ही डिस्कस किया नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। और बैंक अकाउंट हमारा रिसीवर हो जाएगा, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट होगा और डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू डिविडेंड। नेक्स्ट एंट्री है बैंक लोन टेकन, सॉरी 17, dividend collect bank loan taken 18. In this situation we take a bank loan from bank and it treated as separate account. बैंक लोन अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट हो गया, और बैंक लोन जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। ये भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक लोन अकाउंट जो होगा वो गिवर होगा, क्योंकि लोन वहाँ से हमें मिल रहा है तो वो गिवर हो गया, और हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हो जाएगा और बैंक लोन अकाउंट गिवर हो जाएगा। तो बैंक से लोन लेकर हम एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, and when we repay this loan to bank, on that time bank loan become receiver, bank loan account become receiver and bank account become giver. So we pass journal entry bank loan account debit to bank account. Next transaction is insurance premium paid by check. Or insurance premium is expenses for us and it is paid by bank. Then bank become giver. According to rule of personal account, giver is credited, so bank account credited, and insurance is our expenses, so insurance account debited according to rule of nominal account. So entry become insurance account debit to bank account. Next transaction, check received from Ram on January 10. We already discussed that on particular date, if we receive check and not deposited into bank, on that time we pass journal entry check in hand debit to Ram. Here giver is Ram, so Ram account credited and check in hand account debited. ये एंट्री हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब वही चेक हम एंडोर्स कर रहे हैं, देयर इज एंडोर्समेंट ऑफ चेक। दिस चेक Ram's check given to Mohan, on that time it is called endorsement. If we give a particular check of another person to our creditor, on the time it is called endorsement. Endorsement में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी दूसरे पर्सन का चेक हम तीसरे को दे देते हैं। तो ये चेक मिला राम से और हमने उसी चेक को मोहन को दे दिया, और जब चेक मिला था तो इसको हमने चेक इन हैंड में ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पे मोहन रिसीवर हो गया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, अगर ये चेक डिसऑनर्ड होता है तो उस टाइम पे ये पर्टिकुलर जो भी हमने मोहन को दिया तो मोहन अपने को रिटर्न करेगा, तो मोहन हो जाएगा इसमें गिवर, और ये चेक हम वापस राम को रिटर्न करेंगे तो राम हो जाएगा इसमें रिसीवर। तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ये एंट्रीज थी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो हमें बार बार बीच बीच में जर्नल में जो बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे रिसीव करेंगे उसमें हमें ये एंट्री का ध्यान रखना होगा। तो आप इनको एक बार अच्छे से और समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक यू।